दिन में जिन विषयों पर चर्चा हुई उन विषयों को लेकर कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं, रेजोल्यूशंस। इस रेजोल्यूशन को बनाते समय हमने फिन्स के आयोजन समिति और पहले से इसकी कुछ तैयारियां की थी, और फिर यहाँ जितने प्रतिनिधि आए हैं उन प्रतिनिधियों ने जो विषय, इन वक्ताओं ने जो विषय रखे थे उन सभी विषयों के निचोड़ लिए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक स्वतंत्र टीम, जम्मू कश्मीर से यहाँ जो आए हैं वो, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आए हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे टीम्स कॉन्स्टिट्यूट किए थे जो स्थानिक विषयों से जूझते हैं। इन सभी लोगों के सुझाव के आधार पर जो प्रस्ताव बने हैं वो प्रस्ताव मैं पढ़कर सुनाता हूँ। The first National Security Convention under the aegis of Finns was held on March 9th and 10th during the Holy Kumbh at Haridwar, Uttarakhand. The National Security Convention discussed and deliberated on issues pertaining to national security in the light of global, regional and national scenario and resolved as follows. On Jammu and Kashmir, the National Security Convention hereby unanimously resolves that the decades-long festering issues of separatism, infiltration, insurgency, terrorism, and the perception of alienation in the Jammu and Kashmir has been highly detrimental to national integration. The National Security Convention resolves that there is an urgent need to secure the borders by all means, to stop infiltration, take proactive action to frustrate the ongoing proxy war, thwart attempts to dilute the security arrangements and apparatus, concentrate on the all-round social and economic development of Jammu, Kashmir and Ladakh region, and return and rehabilitation of all persons displaced from Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, like all other states of Indian Union, belongs to all Indians. There is a need for consolidation of this aspect in all spheres. मित्रों, ये जम्मू एंड कश्मीर का हमारा रेजोल्यूशन है। नॉर्थ ईस्ट, considering the geostrategic position, the vulnerability of India's northeast and its adverse impact on national security has increased manifold, and also due to insurgency resulting from acrimony among various groups seeking independent identity. The National Security Convention urges the Government of India to initiate immediate measures for ensuring integrated security by providing adequate security infrastructure, securing our borders, and putting in place mechanisms for integrating the people of Northeast emotionally and otherwise. नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ताओं ने अब आग्रह किया है, और ये भी हमने उसके नॉर्थ ईस्ट के रेजोल्यूशन में जोड़ा है, all illegal migrants, foreigners must be detected and their names deleted from electoral rolls, and they should be deported forthwith. And pending such action, they should be confined in a detection camps with immediate effect. In the interest of the security and safety of the region and sovereignty of the country, the central government must stop immediately all attempts at infiltration into the region by sealing the border with Bangladesh and affecting it in other fronts. Third, unconstitutional conversion of tribals and other marginalized people by use of force, fear, inducement, and terror and other unlawful means must be immediately stopped through a special legislation by the Parliament. ये नॉर्थ ईस्ट का रेजोल्यूशन है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले अनेक वर्षों से माननीय इंद्रेश जी और
अन्य संस्थाएं हिमालयन परिवार मतलब हिमालयन रीजन जिसको कहते हैं, हिमालय से संबंधित जो प्रदेश है उसमें निरंतर काम करते हैं और इनके अनुभवों के आधार पर जो हमारे सामने विषय आए हैं उसके आधार पर एक प्रस्ताव बना है। There is an increasing attempt by forces inimical to India's peace, progress and integration to disturb the peace and tranquility of the Himalayan region, thereby dealing a direct body blow not only to the states in the Himalayan region but to the maritime and land border security of the country as well. जो हिमालयन एरिया में, रीजन में जो बातें हो रही हैं उसका असर केवल हिमालयन क्षेत्रों में नहीं परंतु पूरे देश में उसका असर पड़ रहा है। The National Security Convention expresses its deep concern over the explosive social situation being engineered in the Himalayan region and urges the concerned authorities at the central and respective state levels to arrest all such activities detrimental to the region like deforestation, poaching, illegal mining, drug and flesh trade, illegal arms trade and attempts to tamper with age-old conventions, traditions and cultural vestiges. हमारे श्रद्धा केंद्रों पर जो आघात हो रहे हैं वो भी समाप्त होना चाहिए. The Himalayan region occupies a special place of pride in our ancient past, progressive present and bright future. It is the need of the hour to institute a highly empowered task force to study the region, its challenges and potential and initiate a way forward. मित्रों, पिछले 60 साल में हिमालयन रीजन जिसको हम कहते हैं उसके बारे में कोई संस्था सरकार की ओर से नहीं बनी है. आज इसकी परम आवश्यकता है. इसका उल्लेख आग्रहपूर्वक हमने प्रस्ताव में किया है. एक प्रस्ताव है Maoist and Naxal menace. The ever-growing multi-dimensional menace unleashed by anti-national ideology-driven Maoist Naxal forces has adversely affected the internal security situation, economic progress and governance, thereby seriously threatening our national unity and integrity. The National Convention, while recognizing various measures initiated by the Union and some of the state governments, urges the concerned authorities to adopt an integrated approach, undertake all-round economic, educational, social, developmental and psychological and systemic reform measures to address the root cause of the Maoist Naxal problems, while simultaneously tackling the armed threats, international and internal support, both pecuniary and otherwise, like arms supply, etc., and tacit misplaced sympathetic support to forces that are bent upon destabilizing democratically elected governments. मित्रों, कुछ लोगों का सुझाव था कि मोमबत्ती जलाने वालों के खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए. हमने मोमबत्ती जलाने वालों को एक बहुत अच्छा शब्द दिया है, tacit misplaced sympathetic support. आशा है आप इसको समझ पाएंगे. एक और आखिरी प्रस्ताव है इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. मित्रों, बहुत लोगों का सुझाव ये था कि हमारे देश में पिछले 60 सालों में फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमने खूब विचार किया, डिफेंस पॉलिसी के बारे में खूब विचार किया, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में विचार किया, बट ये एक ऐसा देश है जिसने पिछले 60-70 वर्षों में कभी भी अपना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिवाइस नहीं किया. इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मांग करते हुए हमने कहा है, एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, India's preeminence in the Asia-Pacific region in particular and the Eastern world in general is clearly dawning as a certainty in the foreseeable future. The National Security Convention observes with deep concern the inadequacy of our efforts in the past to strongly project the potential and influence of India. National Security Convention strongly recommends the optimum integration of economic, trade, defense and diplomatic policies with a view to exercise positive and proactive influence in the best of regional interest
India's national interest and in order to expound our India's world view, that is Vasudhaiva Kutumbakam.